guys, welcome to my channel. First of all, thank you so much for subscribing to my YouTube channel or to my Instagram. That really motivates me to get a good content for you. So, my name is Kirti. I am expert trainer at IELTS Guru, and I have been an ex-examiner also. So today I am going to discuss some things with you, like which I have seen a lot, because of which students are stuck at 6.5 or 5.5 in their writing. The one who wants 7, they are stuck at 6.5. The one who wants 6, they are stuck at 5.5. Okay, so why we are in that bracket? So although we are putting very good vocabulary, our ideas are good, we are writing like everything perfectly, we are following all the parameters, but still we are not getting 7. So I am going to give you 4 tips, okay? So like 4 things which you guys didn't pay attention to or didn't devote your energy to, which is needed to actually score good. Okay, so now first part is articles. Now I know you guys must be saying, ma'am, we know what articles are. So guys, in IELTS articles hit differently. Okay, so that I'm going to explain you in this video. So you guys must be seeing my result on the screen right now, and I have got 8 in my writing. So whatever the tips I'm going to give you, they are tried and tested by myself also. Okay, I'm not an ex-examiner itself, but I have recently gave the exam and this is my recent results. Okay, so I hope this video would be helpful for you. So without further ado, let's start our video quickly. Okay guys, so here we are. So as I said, today we are going to discuss articles, basically a and the and no article. So you would be surprised to know that the is the most common English word and the a is the 6th common English word. So it is crucial to learn their correct usage, and most of the students actually didn't pay any attention to them. So if you are preparing for the general IELTS and you are stuck at 6.5, so this may be the one reason you are not getting 7. And similarly in academic, if you are stuck at 5.5, so this may be the one reason again. So as I said that I am going to discuss 4 basic things which we didn't pay attention to, because of which we are stuck at 6.5 or 5.5. So this is the first part of it. You will get other parts eventually. Okay, so what I want you to do is, आपकी screen पे एक 2-liner passage दिख रहा है आपको. So you have to count the articles in it. Okay, how many articles it have, and you have 30 seconds for that. Okay, so I found 4 articles here: A, and, the astronomers, the planets, and the stars. So guys, now why astronomers first time is alone, and why second time when we added astronomer there is a the? Same thing with planets and same thing with star. Okay, so to understand this you need to understand nouns. Okay, so which leads us to our first rule. Okay, so let's see our first rule. And our first rule states that whenever you are introducing a plural noun means जो भी चीज़ 2 या उससे ज़्यादा होती है, जैसे एस्ट्रोनॉमर्स, ज़्यादा बंदों की बात हो रही है, सो जब भी आप उसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हो, देयर वुड बी नो आर्टिकल. ओके, लाइक हमारी जो फर्स्ट लाइन थी उसमें एस्ट्रोनॉमर्स के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ था. पर जब आप सेम चीज़ same passage में, I'm talking about passage like your body paragraph 1 only, I'm not talking about complete essay. Okay, so same passage में जब आप उसे इंट्रोड्यूस करते हो दोबारा से, तो आप उसके आगे द लगाओगे ही लगाओगे. इट इज़ मस्ट. ओके, सो whenever you are introducing a plural noun for the first time, there is no need of any article.
However, when you are going to introduce the same noun, now here the synonyms of that noun also count. Okay, like people or humans or masses, they are synonyms, so they count. Okay, so when you are going to introduce the same noun again in the paragraph, you must add the. Okay, so let's see this paragraph. So what happened here is, so astronomers, first time they are single, right? So there is no the in front of it. When we add it again in the second line, it becomes the astronomers. Okay, so first time plural noun would be single, there will be no article, but when the same noun would be introduces, the will come. Okay, same thing happens with planets. First time when we put planets, there was no article. Second time it gets fixed with the. Okay, so this is must. Okay guys, so this is our first rule. So what first rule says, nouns will change to the nouns, means first time plural noun will have no article, but in same paragraph if you have added the same noun again or its synonym, it would get suffixed by the. Okay, so now let's move to our second rule. ओके, सो आर सेकेंड रूल इज़ फॉर सिंगुलर नाउन्स. सिंगल नाउन्स मीन्स जब आप एक चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हो. ठीक है, सो अब प्लूरल की तो हमने बात कर ली कि प्लूरल जब आएंगे तो नो आर्टिकल से द आर्टिकल द में शिफ्ट हो जाएंगे, बट सिंगल नाउन के आगे ए आता है या एन आता है, डिपेंड करता है आपका वर्ड कॉन्सोनेंट है या वॉवल है नेक्स्ट वर्ड. ठीक है, सो वॉट हैपन हेयर इज़, यहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं. एंड बिलीव मी, यहाँ पे मतलब आई हैव सीन एन नंबर ऑफ राइटिंग्स, आई हैव evaluated n number of writings and I have seen this mistake like almost in 98% of writings. Okay, so whenever you are introducing the same single noun again, it would not get a or an, it would get suffixed with the. So a or an noun will shift to the noun. Okay, so first time it would have a or an, but second time it will shift to the. पहली बार जब आप करोगे तो ए और एन आएगा, बट सेकेंड टाइम द में शिफ्ट हो जाएगा. जैसे अ नियर बाय स्टार, एक स्टार की बात हो रही है, बट इट विल शिफ्ट टू द स्टार. ओके, okay, so now how to remember it? Remember it like this: nouns will change to the nouns and a or an noun will change to the noun. सो प्लूरल के आगे पहली बार में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, दूसरी बार में द आ जाएगा. सिमिलरली सिंगुलर के आगे पहली बार में ए और एन आएगा और दूसरी बार में द आ जाएगा. सिंगुलर आर्टिकल्स के सामने कई बार द भी आता है, बट दैट इज़ अ वेरी रेयर केस. ओके, ओके, सो कीप दिस रूल इन योर माइंड and do the quiz which you are going to see just in 1 or 2 seconds. So this quiz has no articles in it, so इसमें a and the और no article सब आना है. सो आपने इसमें बताना है कि कहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, कहाँ पे a लगेगा, कहाँ पे an लगेगा, कहाँ पे the लगेगा. ओके, so you have 3 minutes to do this quiz and then I will share answers with you, but please no sneak peek of the answers, do it first and then see answers. Okay, so your time starts now.
Okay, so let's see the answers now. So in answers, our first two words will have no articles because researchers और experiments दोनों plural हैं और दोनों first time आ रहे हैं, तो कोई article नहीं आएगा. उसके बाद बम्बल बी साउंड की बात हो रही है, मतलब एक चीज़ की बात हो रही है, एस नहीं लगा हुआ पूछे तो उसके आगे ए आ जाएगा क्योंकि हमारा जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, बी, बम्बल बी. अगेन नेस्टिंग बर्ड्स प्लूरल है, फर्स्ट टाइम आया है तो नो आर्टिकल. एंड लिटिल स्पीकर फर्स्ट टाइम है, एक चीज़ की बात है, अ. नाउ आई हैव टोल्ड यू कि कई बार मतलब एक सिंगुलर के आगे भी द आता है, वो तब आता है जब किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस या कोई क्वालिटी बताई गई हो. जैसे यहाँ पे बजिंग साउंड की बात की गई है, यहाँ पे सिर्फ साउंड की बात नहीं है, साउंड की क्वालिटी बताई गई है, उसका एक मतलब टाइप बताया गया है, तो इसलिए इसके आगे द आएगा. ओके, सो द बजिंग साउंड. नेक्स्ट, इनसाइड ऑफ अ नेस्ट, क्योंकि पहली बार बात हुई है और एक नेस्ट की बात हो रही है, एस नहीं लगा हुआ तो अ. सेम थिंग विद अ डेड बम्बल बी, अ टूथपिक. नाउ टूथपिक दोबारा आ रहा है पैसेज में तो उसके आगे द आएगा. ओके सो दिस स्पीकर विल बी द गाइज, क्योंकि पहले लिटिल स्पीकर की बात हो चुकी हुई है, मतलब स्पीकर ऑलरेडी आ चुका है. सो ये यहाँ गलत है, लेट मी करेक्ट इट. सो यहाँ अ स्पीकर नहीं द स्पीकर आएगा. सो नेक्स्ट वन इज़ ऑल्सो द स्पीकर. सो अगर एक चीज़ मतलब आपके उसमें पैसेज में चाहे एक बार रिपीट हो, चाहे 2 बार रिपीट हो, चाहे 10 बार रिपीट हो, नेक्स्ट पहली बार ए आएगा, बाकी हर बार द आएगा. जैसे यहाँ पे हुआ है अ लिटिल स्पीकर, द स्पीकर, द स्पीकर. ओके, सो द स्पीकर क्योंकि रिपीट हुआ है, सिमिलरली नेस्ट रिपीट हुआ है तो द सिंगुलर है फिर भी द. एंड लास्ट द बी, क्योंकि पहले हमने बम्बल बी की बात कर ली है, उसी बी की. Okay guys, so this was it. I hope you learned something new and you brushed up your skills also. So guys, if you want to get your writings evaluated or your speakings evaluated through us, IELTS Guru, we are the team of ex-examiners and highly qualified professionals, and we have helped hundreds of students to score good. So if you want to get evaluated by us or you want online or offline classes, so do contact us. If you're watching it on Instagram, you can DM us, or if you're watching it on YouTube, you can comment, or you can find our contact details in our channel description. So we are happy to help you. Do contact us. So till then, bye bye, take care, and best of luck for your exam and your future, and wait for the other videos also. Bye bye, take care.